Okay, Assalamu alaikum students. Let's get started with May June 2024, paper 6, variant 2. This is an IGCSE physics paper. Let's get started with it. So, थोड़ा सा zoom in करते हैं बेटा. Let's see this. A student measures the spring constant K of a spring by two different methods. The spring constant K of a spring is a measure of how difficult the spring is to stretch. Okay. Method 1 लिखा हुआ है यहाँ पे. The student attaches the spring to a clamp as shown in figure 1.1. ठीक है भाई, स्टूडेंट जो है वो स्प्रिंग को क्लैंप पे अटैच करता है, shown in figure 1.1. The student suspends a mass of 500 grams from the spring. ठीक है भाई, 500 grams का मास यहाँ पे आप सस्पेंड कर रहे हो. Pulls the mass down a small distance and releases it. अच्छा जी, आप मास को जो है वो स्मॉल डिस्टेंस पुल डाउन कर रहे हो एंड देन यू आर रिलीजिंग इट. ओके. द मास ऑसिलेट्स अप एंड डाउन. The student measures the time taken for 20 oscillations for the mass. अच्छा जी, ये 20 oscillations का mass आ गया. The reading on the stopwatch is shown in figure 1.2. Record time t in table 1.1. अच्छा जी, 1.1 में time record कर देते हैं. 17.76 is your time. Perfect. The time period capital T of the oscillation is the time taken for one oscillation. Calculate time period capital T of the oscillation. किस तरह निकालेंगे? This is the time of 20 oscillations. How will you calculate the time of one oscillation? 17.76 divided by 20. निकाल लो बेटा, क्या आंसर आता है? 17.76 divided by 20. The time taken for one oscillation is 0.888 seconds. Simple. Suggest how the procedure can be improved to increase the accuracy of the result. भाई, प्रोसीजर को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट? हाँ जी. टाइम अ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. बेटा, एक ग्रेटर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का टाइम मेजर करो, तो लिख दो टाइम अ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. सिंपल. लेट्स फर्दर मूव अहेड. भाई, क्या लिखा हुआ है? Calculate a value of K1 for the spring constant of the spring. K1 की वैल्यू निकालनी है. How will you do that? 19.7 divided by time. टाइम क्या है भाई? 0.888 का होल स्क्वायर. लेट्स कैलकुलेट दिस. क्या आता है? दिस कम्स आउट टू बी राउंड अबाउट 25 न्यूटन per meter is your answer. Simple, nothing complicated here. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. The student expects the stretch length of the spring. Okay, the student measures the stretch length L of the spring with the 500 gram mass still attached to it in centimeter correct to the nearest 0.1 centimeter. Student जो है measure कर रहा है length when you are attaching a mass of 500 grams. Figure 1.3 shows the stretch spring drawn to scale of a 1/4 full size. अच्छा जी, ये spring है to 1/4 of full size. ठीक है. The length L of the spring is the distance between the dotted lines in figure 1.3. Measure L. तो आपने ये डॉटेड लाइंस के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना है यूजिंग अ रूलर. You have to measure the distance between these dotted lines, capital L, using a ruler. This comes out to be 5.6 centimeter. I have already measured this. अब आपने एक्चुअल स्ट्रेच लेंथ निकालनी है. How will you do that? How will you calculate actual stretch length? Can you realize this diagram is 1/4 of full size? तो हम क्या करेंगे? इस लेंथ को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो. 4 multiplied by 5.6, आंसर क्या आ जाएगा? This comes out to be 22.4 centimeter is your actual length. Record this in the table as well. अच्छा जी, इसको टेबल में भी रिकॉर्ड कर दिया हमने. परफेक्ट. The student removes the 100 gram masses from the mass hanger one at a time and repeats the procedure for m is equals to 400, 300, 200 and 100 gram. The student records the value of L in table 1.2. ठीक है भाई, टेबल 1.2 में आपने वैल्यूज रिकॉर्ड कर दी. Plot a graph of length on the y-axis and mass on the x-axis. Start your axis at the origin. Origin से axis को start करना है. ओके. लेंथ और मास ऑलरेडी मार्क्ड है. ओके.
व्हाट डू यू हैव टू प्लॉट? लेंथ ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा जी, बेटा वाई एक्सिस पे कितने लार्ज बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 and 6। द नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस ऑन द वाई एक्सिस इज 6। ठीक है ना? वाई एक्सिस पे कितने लार्ज बॉक्सेस हैं? 6। ओके, what is the maximum value on the y axis? 22.4। बेटा मिनिमम वैल्यू क्या है वाई एक्सिस पे? 6.1 नहीं कहना। अब देखो आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट द एक्सिस फ्रॉम 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस क्या है? 0। कैन यू कैलकुलेट द स्केल? 22.4 minus 0 divided by 6, this comes out to be what? 22.4 divided by 6, this scale comes out to be 3.7। ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्लॉट अ ग्राफ जिसमें 3.7 आपकी स्केल हो। ऑलवेज रिमेंबर, स्केल हम क्या लेते हैं? इन द मल्टीपल्स ऑफ 1 2 5 and 10। स्केल हम हमेशा किन मल्टीपल्स में लेते हैं? 1 2 5 and 10। सो वी विल राउंड अप दिस वैल्यू, इसको 5 कर देते हैं। व्हाट विल हैपन अगर हम इसको राउंड अप कर दें? व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम 0 5 10 15 20 25 and 30। अब एक्स एक्सिस पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6। देर आर 6 बॉक्सेस ऑन द एक्स एक्सिस, है ना? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस। मिनिमम वैल्यू क्या है भाई एक्स एक्सिस पे? 0। दिस इज योर मिनिमम वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस। कैन यू कैलकुलेट द एक्स का स्केल? यस। मैक्सिमम 500 माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 6। निकाल लो भाई एक्स का स्केल क्या आता है। 83। Obviously we will not plot 83 because 83 is not a multiple of 1 2 5 और 10। तो हम इसको राउंड अप कर देते हैं, 100 कर देते हैं। या 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। 0 100 200 300 400 500 एंड 600। ओके, अब जब आपका मास 500 है, व्हाट इज योर लेंथ? 22.4। ओके, at a mass of 500 the length is 22.4। where will 22.4 lie? Somewhere here। this is your first point। okay, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? at a mass of 400 your length is 18.3। मास 400 है, लेंथ क्या हो जाएगी? 18.3। 18.3 will be somewhere here। ठीक है, 400 के मास पे यू हैव अ लेंथ ऑफ 18.3। परफेक्ट। देन यू हैव अ मास ऑफ 300, लेंथ क्या है? 14.3। 300 पे 14.3 की लेंथ आ गई। समवेयर हेयर 300 इज हेयर। दिस इज योर लेंथ। परफेक्ट। 200 पे क्या लेंथ है भाई? 200 पे और लेंथ इज 10। ओके, 200 पे आपकी लेंथ है 10। दिस इज अ परफेक्ट पॉइंट। व्हाट एल्स डू वी हैव? 100 पे आपकी लेंथ है 6.1। 100 पे और लेंथ है 6.1 रफली हेयर। नाउ आई गेस यू हैव 5 पॉइंट्स, है ना? 5 पॉइंट्स हैं आपके पास। यप। whenever you have 5 points and आपने बेस्ट फिट लाइन बनानी होती है, व्हाट इज योर ऑप्शन नंबर 1? जब भी आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, आपने बेस्ट फिट लाइन बनानी है, व्हाट इज योर ऑप्शन नंबर 1? ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। सारे के सारे पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हो। इज दैट पॉसिबल? Oh, that's possible to some extent।
आई थिंक दैट्स पॉसिबल अगर हम थोड़ी सी uh this point and this point is not lying on the line, chalo, no problem. This option is not being satisfied. 5 के 5 पॉइंट्स एक्यूरेटली लाइन पे लाई नहीं कर रहे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे लाई कर रहे हैं. व्हाट कैन वी डू? If you realize the second thing, yeah, the second option which we can follow is what? बेटा सेकंड ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, हाँ, नाउ आई थिंक इट इज करेक्ट. अच्छा जी, 5 पॉइंट्स तो आपके लाइन पे लाइन ही कर रहे, 5 पॉइंट्स तो आपके लाइन पे लाइन ही कर रहे. व्हाट विल बी योर सेकंड ऑप्शन इफ यू हैव 5 पॉइंट्स? अगर आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, ऑप्शन नंबर 2 टू ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन इज दिस: 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन, 1 पॉइंट above the line, 1 पॉइंट below the line. ये कर सकते हो. एंड यही हमने यहाँ पे किया है. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन. ये पॉइंट बिलो द लाइन है, ये पॉइंट अबव द लाइन है. सो या ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारा काम कर देगा. चलो, व्हाट्स नेक्स्ट? You have to calculate the gradient of the line, show all your working and indicate on your graph the values that you use. अच्छा जी, gradient निकालना है. Gradient निकालने के लिए first of all let's choose 2 points that are maximum distance apart. ऐसे 2 पॉइंट चूज करने हैं जो लाइन में मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हो या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अपार्ट हो. सो विच 2 पॉइंट्स कैन यू चूज? आई थिंक एक ये पॉइंट हो सकता है, या चलो ये पॉइंट नहीं चूज करना तो यू कैन चूज दिस वाला पॉइंट. लेट्स टेक अ ब्लैक या पिंक वाला पेन ले लेते हैं. अच्छा, दिस कैन बी वन ऑफ योर पॉइंट. दिस इज एक्स एक्सिस में 130, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? 7.5. परफेक्ट. कोई और पॉइंट है जो हम चूज कर सकते हैं? विच पॉइंट कैन वी चूज? यस, ये वाला पॉइंट भी अच्छा लग रहा है. ओके, दिस पॉइंट विल बी व्हाट? ये पॉइंट हो जाएगा 480 इन द एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस में क्या हो गया? वाई एक्सिस में हो गया 21.5. ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल. इस तरह से. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपने ग्रेडियंट निकालना है ना बेटा, तो आपने ग्राफ पे ट्रायंगल भी बना के दिखाना है. या दिस ट्रायंगल इज इनफ. अब ये दोनों पॉइंट्स को आप नीचे लिख लो. पहला पॉइंट कौन सा था भाई? 137.5. सेकंड पॉइंट कौन सा था? 480. 21.5. Can you calculate the gradient? 21.5 minus 7.5 divided by 480 minus 130. What is your gradient coming out to be? हाँ जी, gradient क्या आ रहा है बच्चों? 480 minus 130. Gradient comes out to be 0.04. Simple. हाँ, gradient ये आ रहा है. ठीक है. An estimate of K2 is this. अच्छा, K2 की वैल्यू क्या है? 1/gradient. 1/0.04. बताओ K2 की वैल्यू क्या आ गई? दिस कम्स आउट टू बी 25 Newton per meter. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. Two quantities can be considered to be equal if they are within the limits of experimental accuracy, if their values are within 10% of each other. अच्छा जी, two quantities are considered to be equal within the limits of experimental accuracy if there are within 10% of each other. Okay, compare your values of K1 and K2.
K2 की वैल्यू तो 25 है, व्हाट वाज K1 की वैल्यू? K1 की वैल्यू क्या है? ओ, K1 की वैल्यू वाज आल्सो 25, वाओ, नाइस। सो यू कैन से K1 25 है, K2 भी 25 है। State whether your values indicate State whether your results indicate that the values may be considered to be equal. Support your statement with a calculation. अच्छा जी, how will you do that? क्या करोगे यहाँ पे? क्या कहोगे? First of all, you will say, let's calculate the percentage difference in the values of k. 25 minus 25 divided by the average value of k multiplied by 100. दोनों का percentage difference क्या है? 0%. They are equal to each other. Hence, they can be considered to be equal. Luckily, हमारी k की values दोनों ही 25 आ गई हैं, तो there is not much to say here. You can say both the values of k, both the values of k are equal to each other. ठीक है, both the values of k are equal to each other. Hence, the percentage difference is 0%. Both the values are equal, hence the percentage difference is 0%, causing them to be within the limits of experimental accuracy. तो बेटा इसमें तो कुछ लिखने वाला इतना खास था नहीं, बिकॉज बोथ द वैल्यूज ऑफ के वर सेम। इजी, दिस वाज अ वेरी weird सिनेरियो, ऐसा आज तक नहीं हुआ मेरे साथ। बोथ द वैल्यूज ऑफ के आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस द परसेंटेज डिफरेंस इज जीरो, कॉजिंग देम टू बी विद इन द लिमिट्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट A student investigates the resistance of a diode using the circuit shown in figure 2.1. अच्छा जी, we are investigating the resistance of this diode. Okay. The student closes the switch, records the voltmeter reading and the ammeter reading, opens the switch. Perfect. Figure 2.2 shows the reading on the voltmeter and the ammeter. Record the readings on the voltmeter and the ammeter in the first row of table 2.1. अच्छा जी, readings record करनी है हमने। This will be 0.6, 0.7, 0.8, this will be 0.84। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी भाई? 0.84। परफेक्ट। करंट की रीडिंग क्या है भाई? दिस इज 1, दिस इज 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3। तो अगर ये 0.3 है, दिस विल बिकम 0.32, 0.34, 0.36 आई गेस। करंट की रीडिंग क्या हो गई? 0.36। परफेक्ट। Let's zoom out a bit. You have to calculate the resistance now. Resistance कैसे निकालेंगे? 0.84 divided by 0.36. This comes out to be what? 0.34, 0.84 को 0.36 से divide करो. 2.3 ohms is your resistance. Perfect. The student connects a 3 ohm resistor in series with the 10 ohm resistor between terminal X and Y as shown in figure 2.3 and repeats the procedure in A। ठीक है भाई, ये पूरा प्रोसीजर रिपीट हो रहा है, बट ये 3 ohm का resistor आप ऐड कर रहे हो। He then connects the 7 ohm resistor। अच्छा जी, फिर आप 7 ohm resistor भी connect कर रहे हो between X and Y and you are repeating the procedure। Okay. Table 2.1 is incomplete। Okay. Complete table 2.1 by adding the missing values of R and I। अच्छा जी, रेजिस्टेंस और करंट की मिसिंग वैल्यूज ऐड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू इट फॉर दिस रो। वोल्टेज है 0.83, करंट है 0.27, resistance comes out to be 3.1। okay, what else do we have here? अच्छा जी, resistance 3.1 आ गई, और क्या है हमारे पास? okay, in the third row we have voltage and we have resistance, so V is equals to IR।
वोल्टेज 0.81 है, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस इज 4.5, कैन यू कैलकुलेट द करंट? 0.81 डिवाइडेड बाय 4.5, करंट निकाल लो। 0.81 divided by 4.5, this comes out to be 0.18 एम्पेयर। ठीक है, करंट भी आ गया, वोल्टेज भी आ गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। As the resistance between terminal X and Y is increased, the current in the circuit changes. Use your result in table 2.1 to state the relationship between the current in the circuit and the potential difference across the diode. अच्छा जी, हमने बताना है about the relationship between the current in the circuit and the potential difference across the diode. तो आप क्या कहोगे? What will you say? As the current decreases, your potential difference across the diode also decreases slightly. So you can say as the current in the circuit decreases, the potential difference across diode also decreases slightly. Simple. आगे बढ़ते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर ऑफ द डायोड। अच्छा जी, रेजिस्टेंस आर ऑफ द डायोड किस तरह वेरी कर रही है? यू हैव टू टेल एज द करंट इन द सर्किट चेंजेस। तो कैन यू रियलाइज एज द करंट इज डिक्रीजिंग the resistance is increasing. So you can write this as the current in the circuit decreases, the resistance of diode increases. Simple. A student attempts to set up the circuit shown in figure 2.1. The student finds that the ammeter does not give a reading when the circuit is complete. The ammeter is not broken. अच्छा जी, आपको रीडिंग नहीं आ रही एमीटर पे, even though the ammeter is not broken. Suggest what the student may have done incorrectly while setting up the circuit. तो बेटा ऐसा हो सकता है कि when you are setting up the circuit, आपने डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट कर दिया, like this. This is possible when the student is setting up the circuit, उसने डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में सेटअप कर दिया हो. If the diode is in the reverse bias condition, what will happen? No current will flow. So you can say while setting up the circuit, setting up the circuit, the student might have flipped the polarities of the diode. Simple. आगे बढ़ते हैं। Name a single device that can be used to control the current in the circuit without adding extra resistors in the circuit. क्या होगा उस डिवाइस का नाम जो आपका करंट कंट्रोल कर सकती है विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टर इन द सर्किट? वेरिएबल रेजिस्टर। बेटा, वेरिएबल रेजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को कंट्रोल कर सकती है विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टर। सिंबल क्या है? समवट लाइक दिस। ये एरो आता है। ओहो, व्हाट हैज हैपेंड टू माय पेन? एन एरो लाइक दिस। ओहो, बहुत मस्ती कर रहा है जो नोट। एक सेकेंड। एरो लाइक दिस, सिंपल। दिस इज योर वेरिएबल रेजिस्टर। आगे बढ़ते हैं। A student investigates the deviation of a ray of light passing through a transparent block ABCD and measures a quantity known as the refractive index of the block. अच्छा जी, refractive index of the block आप measure कर रहे हो. The student's rate ray sheet is shown
इज शोन फुल साइज इन फिगर 3.1। अच्छा जी, ये फुल साइज में आपको रेट शीट गिवन है। ओके, on figure 3.1 draw a normal at point E. Okay, extend the normal AB, extend the normal above AB and below CD. Okay, आपने नॉर्मल को एक्सटेंड करना है अबव ए बी एंड बिलो सी डी। ओके, लेबल द अपर एंड of the normal with the letter N, the lower end of the normal with letter M. अच्छा, तो basically somewhat like this: N, M, and अगर मैं इसको प्रिसाइसली ड्रॉ करूं तो लाइक दिस, या, और label the upper end of the normal with N, the lower end of the normal with M. Okay, the point where the normal crosses CD with capital G. अच्छा, इसको आपने कैपिटल जी से लेबल कर दिया। दिस इज N, दिस इज M, and you can make everything dotted because this is a normal। ठीक है, ये नॉर्मल है तो आपने हर चीज़ को डॉटेड बना दिया। परफेक्ट, व्हाट एल्स डू यू हैव? ठीक है, यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, मेजर द एंगल थीटा बिटवीन एफ ई एंड ई एन। तो ये क्या हुआ है? ओ, आई गेट इट नाउ। ये एम हमने यहाँ पे नहीं लगाना, दिस एम विल बी हेयर। Okay, the lower end of the normal is M, the upper end is N. Okay, I get it now. Now we have to measure this angle theta. We have to measure this angle theta. How will we measure this angle theta, बेटा? यहाँ पे आप प्रोट्रैक्टर रखोगे at point E, measure this angle. प्रोट्रैक्टर आपने E पे रखा, measure this angle theta. What does your angle theta comes out to be? I have already measured that. This comes out to be 60 degrees. ठीक है? The student positions an illuminated slit on the rate ray sheet so that a ray of light passes along the line FE towards E। अच्छा जी, आप जो है लाइट रे को पास करा रहे हो along line FE। ओके, mark and label with a small crosses 2 points on the ray that leaves CD। ठीक है, मार्क्स एंड लेबल ठीक है, ऑफ द ब्लॉक रिमूव द ट्रांसपेरेंट ब्लॉक। ठीक है, तो बेटा आप कर ये रहे हो कि यू आर पुटिंग अ रे ऑफ लाइट हियर, यहाँ पे। दिस रे ऑफ लाइट इमर्जेस ऑन द आउटसाइड फ्रॉम साइड सी डी। ठीक है, रे ऑफ लाइट यहाँ पे सी डी वाली साइड से बाहर आ जाती है। ओके, तो व्हाट डू वी हैव टू डू? एक्सटेंड द लाइन एफ ई until it meets the right hand edge of the ray trace। आपने एफ ई को एक्सटेंड करना है until it meets the right hand side of the ray trace। चलो कर देते हैं एफ ई को एक्सटेंड। 1 second, I think I will have to bring it from the top। नहीं, इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं। हाँ, now it is। Now we have to extend line FE until it meets the right hand edge of the ray trace। ये हमने कर दिया, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, एंगल थीटा यहाँ पे रहने देते हैं। दीज आर जस्ट लाइक कुकिंग रेसिपी क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ आपने करते जाना है जो ये बोल रहा है। ओके, लेबल द एंड ऑफ लाइन जेड। ठीक है, ये इसको आपने जेड लेबल कर दिया, किस चीज़ को? दिस थिंग। ठीक है, draw a straight line through the two crosses to meet side CD of the block। Label the point where they meet CD with H। अच्छा जी, ये भी कर देते हैं। So
you have to make a line through these two crosses. इस तरह से. ओहो. Like this. एंड द पॉइंट जहां पे ये लाइन सी डी को मीट कर रही है, दैट इज लेबल्ड विथ लेटर एच. चलो जी, ये भी कर दिया. ये हो गया आपका लेटर एच. एनीथिंग एल्स ब्रदर? लेबल द अदर एंड ऑफ द लाइन विथ जे. ओके, इसको भी जे लेबल कर दो. परफेक्ट. व्हाट एल्स? ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ई टू एच. वेयर इज ई? ये ई हो गया, ये एच हो गया. ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ई टू एच like this. Perfect. ठीक है. I think almost everything is done. Let's see what else is left. Measure the length L of EH. EH कौन सी लाइन है भाई? ये वाली लाइन. So you have to measure this length L, EH की. I have already measured this with a ruler because I have done this practically on paper as well. The length L comes out to be 7.5 centimeter. तो यहाँ पे लिख देते हैं 7.5 centimeter. Measure the perpendicular distance small d between the line HJ and FZ. HJ कौन सी लाइन है भाई? HJ and FZ. Okay. Measure the perpendicular distance between HJ, ओहो, and ये वाली लाइन FZ वाली लाइन. ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह मेजर करेंगे भाई? यू मेक श्योर दैट यू, now one second, let me do it correctly because this is the most important part here. What you will do is you will sketch a line from H, drop it till Z, और आपने मेक श्योर करना है यहां पे भी 90 डिग्री बन रहा हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा हो. मेजर दिस डिस्टेंस d. ठीक है, दिस विल बी द डिस्टेंस d बिटवीन लाइन एच जे एंड एफ जेड. दिस डिस्टेंस d comes out to be 3 centimeters. Can you calculate d over l? Yes. 3 over 7.5 d over l की वैल्यू बेटा क्या आ जाती है? Let's calculate it using a calculator. 3 divided by 7.5, 0.4 is your d over l. Okay. The measurement of a quantity is reproducible if a similar result is obtained when the measurement is repeated by a different method or under different conditions. Suggest how the student can adapt this experiment to check the value of d over I is reproducible. बेटा एक quantity reproducible कब होती है? When the measurement is repeated by a different method or under different conditions and you get the same answer. तो आप क्या कर सकते हो? To check that d over I is reproducible or not, what you can now do is perform the same experiment with an angle theta equals to 60 degree. But this time, आपकी रे कहाँ पे हो? On the right side of the normal. So you can say perform the same experiment with an angle theta is equals to 60 degree on the other side of the normal. You can say repeat the experiment with theta is equals to 60 degree on the other side of the normal. Perfect. Suggest one source of inaccuracy in this experiment even if this is carried out very carefully. by inaccuracy की क्या वजह हो सकती है यहाँ पे? Yes,
डिफिकल्टी इन प्लेसिंग द क्रॉसेस एक्यूरेटली। बेटा ये जो आपने क्रॉसेस प्लेस किए हैं दीज आर डिफिकल्ट टू प्लेस, क्योंकि लाइट को अलाइन करना और देखना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो डिफिकल्टी इन प्लेसिंग द क्रॉसेस एक्यूरेटली, द क्रॉसेस एक्यूरेटली। ठीक है, एक ये सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी हो सकती है। अच्छा, मेजर द लेंथ एल ऑफ एच जी, या क्या कह रहा है जी एच। अच्छा जी, जी एच की लेंथ मेजर करनी है। जी एच है कहाँ पहले? जी 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 जी, या here you have G, H का है ये। Okay, this is easy. You have to measure this capital L. You have to measure this capital L. This comes out to be 4.3 centimeters. इसको यहाँ पे लिख दो। Okay, so you can calculate the refractive index value like this: 0.866 small l divided by capital L. 0.866 small l की value क्या थी भाई? 7.5. Okay, 7.5 divided by 4.3. What does your refractive index value comes out to be? 7.5 divided by 4.3. This comes out to be 1.51 as your refractive index. आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा जी, let's see this. This is a good question. Okay. A student sets up a flexible track at the edge of a bench. अच्छा जी, ये flexible track आपने setup किया हुआ at the edge of a bench. Okay. The student investigates the metal ball as it rolls down from rest down the track and travels through air. The metal ball travels a horizontal distance d through the air and lands in the tray of sand placed on the floor. अच्छा जी, tray of sand पे land कर रही है, placed on the floor, and is covering a distance of d. Perfect. Plan an experiment to investigate how one variable affects the size of this distance d. Okay, I already have a variable in mind. मैं क्या टेस्ट कर सकता हूँ? मास। I can take different masses of balls, throw it from here and see कि कौन सी मास की बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। The apparatus available includes this: flexible track, clamp ball, selection of metal balls. ठीक हो गया। State the one variable that you have chosen to investigate. मैं लिख देता हूँ I have chosen to investigate, या हम इस तरह लिख सकते हैं the mass of the ball will be changed and we will investigate how, या बल्कि सबको स्क्रैप अप कर दो, यू कैन राइट दिस, यू कैन से वी विल इन्वेस्टिगेट how the mass of the ball mass of the ball affects the distance d traveled। ठीक है, ये छोटा सा हम कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा लिस्ट एनी एडिशनल apparatus that you will need. First of all, you will need a meter rule to measure this distance. Second of all, you will need a beam balance या top pan balance to measure the mass. तो दोनों चीज़ें लिख देते हैं। You will be needing a meter rule, a meter rule will be needed to measure mass, and oh sorry, a meter rule will be needed to measure the distance d, and a beam balance will be
needed to measure the mass of the ball. मास ऑफ द बॉल को हमने एक लेटर दे देते हैं, दैट इज एम. परफेक्ट. लेट्स गिव इट अ वेरिएबल. एक्सप्लेन हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट. व्हाट विल यू डू? What will you do? Measure the mass of the ball and release the ball from rest. Record the distance d traveled. Record the distance d traveled by the ball. बेटा आपने क्या करना है, डिफरेंट मासेस की बॉल्स लेनी है और रिकॉर्ड करना है हाउ मच डिस्टेंस ईच बॉल ट्रैवल्स. ओके. इसको आप फिर क्या करोगे? मेजर द मास ऑफ द बॉल एंड रिलीज द बॉल फ्रॉम रेस्ट. रिकॉर्ड द डिस्टेंस डी ट्रैवल्ड बाय द बॉल. व्हाट विल यू डू नाउ? Repeat the experiment for at least 5 different values of mass. Repeat the experiment for at least for at least 5 different values of masses. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? आई थिंक उसके बाद आपने टेबल बनाना है. नो, यू हैव टू टेल विच वेरिएबल विल यू कीप कांस्टेंट. कौन से वेरिएबल्स आप कांस्टेंट रखोगे? यस, द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, मतलब आप बॉल को हमेशा रेस्ट से रिलीज कर रहे होगे. ओके. व्हाट एल्स विल यू कीप कांस्टेंट? द हाइट ऑफ द स्टैंड विल बी केप्ट कांस्टेंट. तो ये सारी चीज़ें लिख लो. द इनिशियल speed of the ball and the height of the stand should be kept constant throughout the experiment. Throughout the experiment. अच्छा जी, फिर आपने टेबल बनाना होगा. अच्छा, अब आप टेबल कैसे बनाओगे भाई? बहुत इजी है. टेबल कैसे बनाएंगे बेटा? मास स्लैश kgs, distance traveled स्लैश meters. और आप क्या कहोगे? प्लॉट अ ग्राफ ऑफ मास ऑफ द बॉल अगेंस्ट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल. कंपेयर या टू सी वेदर द मास ऑफ द बॉल इफेक्ट्स द डिस्टेंस डी ट्रैवल्ड. तो यहाँ पे लिख दो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ मास ऑफ द बॉल against the distance traveled to see whether mass affects the distance traveled. This marks the end of this paper. If you have any questions, feel free to ask in the chat below.